I am a guest. I'm thrilled to be here. I'm expecting to see some fantastic talent tonight. I'm looking forward. This is about the third time I've been to Mumbai, so I'm very happy to be here. What is beauty for me? It's just the oldest things are true. Beauty's from the inside. It's from the inside every time. Who is favorite Bollywood actor? Who is favorite Bollywood actor? Salman Khan, one of my favorites. Amir Khan, who I've met, and Salman Khan. At the moment, I'm preparing a film called Jungly with Vidya Chamuel, and it's going to be an amazing action adventure. What's your favorite movie in the Bollywood right now? I like Sultan. Sultan? Yes. Yes. I've met Shahrukh. I'm a fan. I'm a great fan of Bollywood films. But my favorite film of my own work is a little inspired by the dancing in Bollywood. Excuse me? Oh yeah. Thank you. साला मैं गारंटी मैं पेज 3 बन जाएगी ना टोटल अरे मिस यूनिवर्स है 2016 मेन यहाँ खड़ा करना फिर ये सर में खुजली हो गई यार इसको क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग इसकी अंग्रेजी बात लगी पड़ी है जाऊ छू Okay, voices. Iris. Iris looks great. Okay, you want me to talk here? No, they want me to wait. Good? Boys, he's the translator. वो उनको पूछेंगे वो जवाब देंगे. No, that's good. I'm going to speak in English, but yeah, just in case. That's it. Okay. अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना होगा. You're good? Okay. Hi everybody, I'm so excited to be here as a judge of Miss Diva tonight. So I hope you will enjoy the show. I think it's going to be a very big surprise and I can't wait to see it. Are you planning to go in a Bollywood movie future? I don't know, why not? That's a good question. I'm learning Bollywood dance, so I have to learn a lot more, but why not in the future? Who's your favorite actor in Bollywood? Of course it's Lara. She's so beautiful and because she's the director of Miss Diva, I love her so much. What's your favorite movie in this Bollywood? Actually, I like the Bollywood that we did in France. Like we're going to India to film kind of Bollywood movies and we did one. It's a very romantic movie, so I love this one. But because I just learned English, I don't know a lot of Bollywood movie, but I promise
I'm going to watch a lot now. Do you like Salman Khan or Shah Rukh Khan? Sorry? Do you like Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan? C'est lequel qu'on a discuté ce matin? Oui, mais c'est lequel qu'on a discuté ce matin? Oh, okay. Okay, so this morning we were talking about Shah Rukh Khan because he's like doing romantic movies. So I would like to see it. Thank you so much. Thank you. You just stand here. Okay. Stand here for a moment. Thank you so much. Okay, thank you. Good luck. Excuse me, left side. Hi everyone. So I'm really excited for this night because the fate of one girl will be changed, and of course she'll have very less time to prepare for Miss Universe. But all the best to all the girls and all the best to the winner. May the best girl win. I really want the most deserving girl to win, the one who is very confident, the one who is very humble and most prepared to go for Miss Universe. So let's see how it goes.
meet you, the Arjun Bhullar. He's the UFC fighter. He's going to fight in India very soon. So, Arjun Bhullar, I think everybody know about him. He's a Commonwealth Games gold medalist. So he's with me right now. So you can ask him anything you want to ask. So, yes. Expectation like your beauty. What's the beauty for you? For me, beauty is this man right here. I'm here to support my man. I'm here on behalf of the UFC. Yes. I won my first fight representing India and recently, but I'm here to support him and be with the people. Good, man. For me, I think I can't describe beauty in words, right? I can't describe beauty in words. I think beauty is everything. I think beauty is, it's depend on you, like what you like. So I can't describe. So I don't know, man. Yeah. आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, हमारी बायोपिक बहुत जल्दी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आई हैव लाइक बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं अभी लाइफ में. सो थोड़ा सा इंतजार किए, ज़रूर बनेगी. मूवी यार अभी मैं बॉक्सिंग में ही अच्छा हूँ. आई थिंक लोग मेरे को बॉक्सिंग में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं कि मूवीज है. लेकिन मेरे पास ऑफर आए हैं मूवीज़ के, लेकिन अभी मैं बॉक्सिंग में बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं माइट भी दिसंबर में मैं दोबारा से फाइट करूँ. यस. आज के शो के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत सारे लोग हैं, आप क्या? आई थिंक जो हमारी मिस डीवा होगी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ऑन मिस यूनिवर्स. ये बहुत बड़ा एक मुकाम है. हमें पता है कि लाइक कितनी बड़ी जॉब है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. तो आई थिंक शी शुड बी लाइक फिट ईच एंड एवरी सेक्टर. यस. थैंक यू जी. हो गया जी. अच्छा जी. क्या एक्सपेक्टेशन इस तरह से मिस दीवा से? व्हाट गोइंग टू डू इनसाइड? आप क्या करने वाले हैं? जज करने वाले हैं? पैनल? ये कौन? हाँ, क्या कर? वेल ये मेरा एक्चुअली दूसरा एक्सपीरियंस है. मैं एक बारी पहले आई थिंक 2 साल पहले मिस इंडिया के को भी जज किया था मैंने. बहुत ही इंटरेस्टिंग इवनिंग था. आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनली यहाँ से जो लड़कियाँ हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इंटरनेशनल स्टेज पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करें. एंड एज वी नो इन सब इंटरनेशनल पैजेंट्स में ऑल आर इंडियन गर्ल्स हैव मेड अस प्राउड. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग. कभी सर बहुत सारी लड़कियां उम्मीद करते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर उनको जज करे तो नेक्स्ट मूवी में काम मिले. इस तरह की उम्मीद लेकर कोई आपकी विचार है? जी, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो है मिस डीवा है या मिस इंडिया है, यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ हमारी इंडस्ट्री में आती हैं और बहुत ही वेल नोन जो परफॉर्मर्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, चाहे वो सुष्मिता सेन हो या ऐश्वर्या राय हो या लारा दत्ता हो, दिया मिर्जा हो, बहुत सारी हैं. वो इन प्लेटफॉर्म से आई हैं. तो ज़रूर आई मीन एज अ डायरेक्टर हम हमेशा नए फ्रेश टैलेंट को ढूंढते रहते हैं. हो सकता है आज शाम हमें कोई फ्रेश टैलेंट मिले आज यहाँ. लास्टली उन्होंने जैसे आपने लास्ट टाइम जज किया था, बट सब कहते हैं कि जजिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है. एज अ डायरेक्टर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जजिंग एक्चुअली किसी को भी जज करना एक कंपटीशन में अलग इंडिविजुअल्स को बैठ के रेट करना कि ये इनसे बेटर है या ये उस लड़की से बेटर है, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट बिकॉज आई थिंक सबके अपने अपने एसेट्स होते हैं, सबके अपने अपने पर्सनालिटी में पॉजिटिव्स होते हैं. तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन बेहतर है बिकॉज दे ऑल विनर्स. लेकिन अल्टीमेटली ये एक कॉन्टेस्ट है तो इनमें से एक को चुनना हमें ज़रूरी होता है और उसके लिए हम एक रेटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं और फिर जब वो कोलेट करते हैं तो डिसाइड किया जाता है कौन विनर है. कभी सर 83 की जिस तरह से हमने देखा सब आज तक लोग भूले नहीं, क्या प्रोसेस चल रहा है 83 का? जी 83 जैसे आपने कहा बहुत ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट है. वो मैं मानता हूँ फिल्म से ज़्यादा बढ़कर है क्योंकि फिल्में तो हम बनाते रहते हैं ज़िंदगी भर बनाते रहेंगे. लेकिन कभी कभी ऐसे एक प्रोजेक्ट आते हैं जो फिल्मों से और करियर से ज़्यादा ऊपर होते हैं और 83 उस किस्म का एक प्रोजेक्ट है. और मैं आई थिंक कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि उस कहानी ने मुझे चूज़ किया. किसी भी फिल्म डायरेक्टर को जा सकती थी और बहुत ही स्पेक्टेकुलर कहानी है. एक ट्रू स्टोरी है, रियल लाइफ हीरोज़ हैं हमारे और सब जानते हैं कि 83 में क्या हुआ. पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता. तो ये कहानी को सुनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. जी लारा दत्ता के बाद कोई भी मिस यूनिवर्स बनी नहीं है. अच्छा
आई थिंक देखिए मिस यूनिवर्स इटसेल्फ टाइटल से ही पता चलता है कि दुनिया भर के लोग इस पैजेंट के लिए आते हैं। आई थिंक हमारे इंडिया से काफ़ी मिस यूनिवर्स हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक पिछले 10 साल में अगर नहीं आई हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड अबाउट, बिकॉज एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। कभी ना कभी आगे जाके आई थिंक देयर विल बी वन मोर गर्ल फ्रॉम आवर कंट्री हु विल डू अस प्राउड। One initiative or PM has taken like no pataka, no patakri nahi फोड़नी। Like thought is new। किसने इनिशिएट? सुप्रीम कोर्ट। जी जी जी, मैं सहमत हूँ इस डिसीजन से। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि दिवाली पे वो पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे, लेकिन आई थिंक हमें अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि किस किस्म का हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन है, और सबसे ज़्यादा असर उसको बच्चों पे पड़ता है। बच्चे सबसे ज़्यादा जिद करेंगे कि पटाखे जलाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उनकी सेहत पे ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये करेक्ट डिसीजन है। जी, वॉच करेक्ट। कैसा लुक लगा आपको रणवीर को काम कर रहे हैं? जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। रणवीर तो आप जानते हैं मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और मेरी नेक्स्ट फिल्म भी रणवीर के साथ है, तो मैं तो काफ़ी वेट कर रहा था इस फर्स्ट लुक के लिए, और सबने देखा है इट्स एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, इंटरनेशनल स्केल पे है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसे आपने कहा इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। ऑल द बेस्ट टू रणवीर, दीपिका एंड ऑफ कोर्स संजय सर। जी, बच्चन साहब का बर्थडे है, मैंने उनको ऑलरेडी विश किया है, और बच्चन साहब जो हैं एक लिविंग लेजेंड हैं, एक लैंडमार्क बर्थडे है, 75th बर्थडे है। बच्चन साहब की वजह से ही मेरी जनरेशन के सारे लोग फिल्म मेकर्स बने हैं, उनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं, उनकी वजह से हम इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। तो मेरी तरफ से बस मैं आई वुड लाइक टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। Hello, this is Kabir Khan and here's wishing all of you a very happy Diwali. Thank you so much, sir। Thank you। Just stand here for the video। I'm expecting some beautiful, gorgeous, stunning girls to win this contest, who will be representing our country, India, tomorrow in various contests in different countries. So they should definitely be eloquent. They should definitely be the pride of our countries and the pride of our country. They should definitely outshine in different countries as India. Yes, I'm very, very happy for Shantanu Maheshwari. He's been an extremely good and a very, very strong contestant throughout the journey of Khatron Ke Khiladi, and I'm very happy for him, and I wish him all the very best for future.
like I have always believed that I don't believe in letting my cat go out of my purse at this moment. I think I should be in the right position to say something very soon, and I'm soon gonna break some good news. Yes, thank you so much. Thank you for having me. Yeah. Spread love, spread love. My hairstyle is this way, right? So this is like when you wear a gown, guys, it's so difficult. I'm telling you, this is crazy. Alright, thank you. See you. आजा। देखो हर साल ये जो है इवेंट जो हमारा इवेंट है ये तो फिक्स ही है, हमने आना है बहुत साल हो गए, आई थिंक 12 years now, and it's every time gets better and better, and there's no doubt that it's more professional, I think, and India has so many beautiful girls, and we are dying to see every year the new beautiful girls. Yes, new somebody, faces. some present coming for the film industry.
Hello. Hi guys. Hi. Well, they've asked me to be one of the jury members and to judge to decide on who's going to be Miss Diva tonight. Yeah. Sorry? What's beautiful? What's beauty for me? Well, beauty is not only external beauty. For me, it's an internal beauty which is equally important. And it's somebody who's compassionate, somebody who thinks for the society as well. And of course, for me, it's beauty along with brains, which matters. Yes. I'm very happy, yeah, that's what we expect whenever our new trailer comes. That's what we hope, that people like it, people appreciate it, and the kind of response we're getting from our social networking sites, it's quite overwhelming, and we're really keeping our fingers crossed and hoping for the best. It has just become very hectic. Nothing has changed apart from that. I'm still the same person. I still love, my first love has always been acting, and it will always be acting. And that's the thing I enjoy the most, being in front of the camera and acting. But yeah, now I have to do other things also, apart from just acting in a film. No, not really. No, imagine the kind of money Newton has made. It's such an amazing phase. I think it's a very welcome change in the industry, and the kind of films people are accepting now. Content has finally got its due respect. I'm very happy about this fact. And for me, content has always been the king since my first film. I've never really never thought about how it's going to perform at the box office. That's something which is beyond our control, and we really can't think about that. Yeah, we all love him. Yes. Yes, of course, I would love to wish him. I've already wished him. I'd love to wish him here as well. A very, very happy birthday to. For me, he is Indian cinema. Indian cinema is equal to Amitabh Bachchan. Yeah. Well, it's not effort. It's majboori, because I shaved my head half for Bose for my series. So till my hair grows back, I have to just keep using these headgears. Thank you. Thanks a lot. Thank you guys. Hello, who's asking? Actually, it's my shopping from Spain right now, so no designer today. It's my own collection. It's always very nostalgic when I come here, because being a Miss India, walking down the same red carpet and seeing it happen all over again is just nostalgic and amazing at the same time. And looking for a great show, and hope the best one wins the crown. Thank you.
Thank you. अच्छा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. Thank you. Well, actually, I'm dressed in a tribute tonight to all the women in defense. This contest has always been about women's empowerment, and I'm wearing a custom-made Shantanu and Nikhil tonight. It's a tribute to Nirmala ji, who's our Women Defense Minister, to all the women who will soon be in combat, to the 3 women fighter pilots that we have in the armed forces. And I'm very, very excited. This is the 4th year that I'm associated with Yamaha Fasino Miss Diva 2017. And today we will crown a new winner who will go on to represent India at Miss Universe. How nostalgic do you feel every time you attend a beauty contest, from the fact that you were a trendsetter in your time? So, do memories come back flooding? I think memories come back every year. I've been very, very fortunate to have the opportunity to mentor 4 batches of girls who've gone on to represent India. And right from day one, I know exactly what they're going through. So I'm actually a very good person for them to have on their side. Well, I've been filming through pretty much most of this year, since June, July. So hopefully the movie will release, I don't know when, that Vashuji, who's the producer, has to decide. But it's a lot of fun. There's Baman, there's Karan, there's Sonakshi, Daljit, and it's been a blast shooting it. Jury comprises of, the judges comprise of Shahid also. What are you thinking like about your, the girls? How will be they facing their, the tough competition? I think this year we have an incredible batch of girls. They are from very, very diverse backgrounds, but they have a singular ambition in mind. And they've gone through their entire training process. I'm extremely happy with the way that the girls have really developed and transformed themselves in the weeks that we've spent together. And for the very, very first time, we also have the Miss Universe organization, the president of the Miss Universe organization, and the reigning Miss Universe, who are going to be on the judging panel tonight. So I think it's a very special night, and I'm looking forward to getting in there and getting on with the show. Thank you. Huh? Wishing all the viewers a very, very happy, safe Diwali. Please say no to crackers. Have an amazing festival of lights, and thank you so very much for joining us tonight. Thank you. Thanks.
अरे रुको थोड़ा मैं तो हमें आधा बार तुम लोग सेंटर लिया था Done? Thank you.